Okay, today we are going to discuss what is the meaning of independent sets first of all. So, given a graph G, we are given a graph G, we are going to identify the given independent sets in that. So, what is the definition of independent set? A set of vertices I is called independent set if no two vertices in set I are adjacent to each other, or in other words, the set of non-adjacent vertices is called independent set. So what is the definition of independent set? अगर हमें एक ग्राफ दिया गया है तो it should be an undirected graph, तो हम उसमें से उन वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट सेट जो एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो. नाउ हाउ टू नो कि दो वर्टिसेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है? अगर उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट एज नहीं है, देन वी कंसिडर इट टू बी नॉन एडजेसेंट. ओके, तो क्या हमारे पास एक ही ग्राफ में अलग अलग इंडिपेंडेंट सेट्स भी हो सकते हैं? द आंसर इज यस. We can have different independent sets within a single graph. It is also known as stable set. Okay. So I is an independent set in graph G is called independent number of G. That is the maximum number of non-adjacent vertices. अभी जो हमने बात की है कि एक इंडिपेंडेंट सेट होता है, इंडिपेंडेंट सेट मींस वो वाली वर्टिसेस जो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, उसी में से हम लोग एक मैक्सिमल भी निकालते हैं जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट इंडिपेंडेंट वर्टिसेस होती है. नाउ प्लीज कंसिडर दिस ग्राफ. अगर मुझे इसमें से इंडिपेंडेंट सेट्स निकालने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं एक सेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट सेट्स की बात कर रहा हूं विच आर नॉन एडजेसेंट. तो वो कौन से हो सकते हैं? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं वन की, सो दैट मीन्स एक सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ मैं वन को कंसिडर करता हूं. अगर इस सेट में मैं देखूं तो एक ही नोड है, तो दैट नेचुरली मीन्स इट इज नॉन एडजेसेंट टू इटसेल्फ. उसके बाद एक सेट के अंदर सिर्फ 2 हो सकता है, एक सेट के अंदर सिर्फ 3 हो सकता है, और एक सेट के अंदर सिर्फ 4 हो सकता है. ओके, अदर देन दैट, अगर आई वांट टू हैव 2 वर्टिसेस इन अ इंडिपेंडेंट सेट, 1 के साथ क्या मैं 4 को रख सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज 1 से देयर इज अ डायरेक्ट एज टू 4. क्या 1 के साथ 2 को रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट एज फ्रॉम 1 to 2. क्या 3 को रख सकता हूं? द आंसर इज यस, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट एज फ्रॉम 1 to 3. सो दैट मीन्स अगला इंडिपेंडेंट सेट क्या हो सकता है? 1 to. उसी तरह से कोई और बचा है? द आंसर इज यस, द नेक्स्ट सेट कैन बी 2 to. So how many possible independent sets are there for this graph? The answer is 6, of which 1 by 3, 1 comma 3 and 2 by 2 and 4 are called the maximum sets, which means total number of maximum number of vertices in the independent set for the given graph is 2. I hope you are able to understand what is the meaning of independent sets. Now let's move further. इंडिपेंडेंट सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट सेट्स आर रिप्रेजेंटेड in which there should not be any edges adjacent to each other. वो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं.
and there should not be any vertices to adjacent to each other. अब इसके अलावा हमारे पास दो टर्म्स और हैं which are known as maximum and maximal. So students, please try and understand the difference between maximum and maximal. So a graph is given to you at the bottom. तो इस ग्राफ को अगर हम चाहें तो हम लोग एक बार इसे रीड्रॉ भी कर सकते हैं. So just focus on this graph. The graph says that there are 5 nodes in it. There are a total of 5 nodes. Let me redraw it. This is A, this is B, this is C, this is D, and this is E. There is an edge from A to B, A to C, C to D, B to D, and D to E. Now, let us consider, you can say A as one vertex of the independent set. इसके साथ दूसरा नोड कौन सा हो सकता है इंडिपेंडेंट सेट में? C cannot be because it has a direct edge from A. B भी नहीं हो सकता है और D भी. अब E भी नहीं हो सकता है because there is a direct edge from D to E. So what is the independent set in this? This is called A to D, and this is called the maximal independent set. Why this is called the maximal independent set? Because I cannot add more vertices to this set and maintain the property of independence. अब A और D के बीच में, यानी this is a set of 2 vertices. अब मैं इसके बीच में और vertices add नहीं कर सकता हूं. अगर मैं add करूंगा, then those will not be considered as the independent set. Now I am going to give you the example of what is the meaning of maximum independent set. This was maximal, now maximum. If I consider C and I consider D, now can I add E to this? The answer is yes, because E is not adjacent to C or D. So I have another independent set from the same graph, which is known as C, B, and E. Now this is called this is a maximal set also, but this is the maximum set also. Why this is considered to be the maximum set? Because of all possible independent sets in this graph, this is the set having the maximum number of vertices, which is 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. So this is the difference between maximal and maximum. Maximal is you can have maximal as a independent set in which more nodes cannot be added, and maximum means this is the largest number of nodes that we can have. So what is the definition? Set number 2, which we have just now created, which is B, C, and E, okay, is the maximal independent set for the same reason. यानी ये maximal भी है और ये maximum भी है because there is no larger independent set in the graph. Now S1 is also an independent set, but this is only the maximal set. This is not the maximum, since no other vertex can be added to S1. So this is the difference. So A and B are only the maximal set, whereas C, B, and E are both the maximal and the maximum set. I hope you have understood
this very important definition. And अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक सिंपल सी एल्गोरिदम जिसका नाम है सीरियल एल्गोरिदम टू फाइंड if the given what is the maximal set that we can get from a given graph. So please have a look at this graph very carefully, and then we will see how to get a maximal independent set out of the given graph. So there is one example given in here. The first set consists of A, D, I, and H. Is this the maximal independent set graph? A, D, I, and H. Okay, so they have given to us is A, D, I, and H. Okay, so I have drawn these also. तो क्या ये एक मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है? तो हमें क्या देखना है इसके अंदर कि इसमें कोई ऐसी ग्राफ, गिवन ग्राफ में ऐसी कोई नोड है जिसके अंदर हम लोग वर्टेक्स को ऐड कर सकें एंड इट इज स्टिल द इंडिपेंडेंट सेट. अगर हम बी को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो B is considered to be adjacent to A and D. C is adjacent to H, K is adjacent to both, G is adjacent to D and I, E is adjacent to D, F is adjacent to I, and J is adjacent to H. So which means that this is an perfect example of an independent set which is maximal also. But do we consider this? Because it has only 4 nodes. Can we create a bigger maximal set than this? The answer is yes. There is a possibility for that. Okay, so there is a possibility for that. तो अब हम उसके लिए भी इस चीज को हम लोग चेक करेंगे. ठीक है. So we are also going to check for that whether or not we can create a bigger set than this or not. So for that we are going to see an example, and the name of that algorithm is linear algorithm, serial algorithm. I pardon, serial algorithm. Let us start. What does the linear set algorithm says? The linear set algorithm says we have a set of 2 vertices. One is called C and one is called L. I hope it is clear. C will initially contain all the vertices of the graph. So what does C contain? C contains all the vertices of the graph. As you can see in this set C, it contains all the vertices in the graph. Now what does L contain? L contain all the vertices which are currently included in the independent set. हम जो independent set बना रहे हैं उस independent set के बीच में जो nodes in vertices include कर ली हैं, that will be considered in the set L. What will be the initial value? The initial value will be null, khali. So there is nothing in the L, as you can see. So what are the steps of this algorithm? Please focus here. What are the steps? Begin with the first vertices in the set C. हमने करना क्या है?
हमने इस सेट में से, सी सेट में से पहली नोड को बिगिन करना है, इंक्लूड कर लेना है, इंक्लूड दैट नोड इन एल, उसको एल में इंक्लूड कर लेना है, रिमूव इट फ्रॉम सी along with its adjacent nodes and repeat. It is a two-step algorithm जिसमें हमने एक नोड को उठाना है सी में से और उसको एल में डाल देना है, फिर सी में से उस नोड को और उसके जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको रिमूव कर देना है, एंड देन कंटिन्यू विद दीज टू स्टेप्स. I hope students you are ready with this. I am going to start with the example, and I hope that you are focusing on this, because if you have your focus at this moment, it will be easiest algorithm. So let us start. First node is A. So what we are going to do is we are going to include A as the independent vertices in the set. हम ए को यहां से रिमूव कर देंगे. अब हम चेक करेंगे कि ए के एडजेसेंट कौन कौन है. ए के एडजेसेंट बी एंड ए के एडजेसेंट ई. सो दीज टू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट सेट. तो हम लोग यहां से बी और ई दोनों को रिमूव कर देते हैं. विच इज द next vertex is C, so we will include C in this set and remove C from the set C. अब हमें ये देखना है कि C के एडजेसेंट कौन कौन है. C के एडजेसेंट है B. B को हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं. नेक्स्ट इज K, so we can remove K, and the next node adjacent to C is H. तो हम लोग H को भी रिमूव कर. नाउ पिक अप द नेक्स्ट वर्टेक्स. नेक्स्ट वर्टेक्स इज D. There we go. We will remove D and check which nodes are adjacent to this. सारी nodes already remove हो चुकी हैं, सिर्फ G बची है, तो हम लोग G को भी यहां से रिमूव कर. Next node is F. So let us remove F from this. ठीक है, तो अब हम लोग F को यहाँ पर डाल दिया है. F के एडजेसेंट कौन है? F के एडजेसेंट है I, तो हमने I को कर दिया. ठीक है, एंड द लास्ट नोड लेफ्ट इज J. जैसे ही हमने J को रिमूव किया, हमारी टर्मिनेशन कंडीशन मीट हो गई है, and that termination condition is when C becomes null, we will terminate. So what is the maximal independent set that we have got is L is equal to A, C, D, F and G. This algorithm is called serial algorithm to find the maximal set within the given graph. What are the steps? The steps is step number 1 is include the first node. Include the first node in set L. The second step is remove the node from C along with the adjacent nodes. Okay, so these two steps have to be included within the loop. What is that loop? Repeat till C is not equal to null. जब तक C null नहीं हो जाता है, आप इन स्टेप्स को, इन दो स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे. This is an example of finding
the maximal set using the serial algorithm. So let's move further. Now we are going to discuss. Now we are going to discuss a special case which is given inside your syllabus, that is the maximum weight maximal independent set. So what we are supposed to find is the maximal independent set. What we are supposed to find is a maximal independent set with the weight value which is the sum of which it is highest. अब इसमें weight कहाँ से आ गया? Now the graph that is given to you does not include weight. So this graph does not include weight. What is weight? If I say A is 5, E is 6, this is 4, this is 3, this is 7, this is 10, and so on. So not only that I want to create the maximal independent set, but what I want is that the sum of weights of all vertices inside this independent set should be maximum. Okay, so let us start. I'll give you an example in here, and then we will continue. For example, consider this graph. This graph says 10, 40, 10, 10, just a moment. So we have a graph that is 10, 40, 10, 20 and 10. So इसके अंदर हमें मैक्सिमल ग्राफ विद मैक्सिमम वेट निकालना है. तो हमारे पास एक मैक्सिमम ग्राफ है जिसमें हम लोग इस नोड को, इस नोड को और इस नोड को, इन तीन नोड्स को कंसीडर कर सकते हैं. इनका वेट कितना है? 10 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. और एक मैक्स इसमें इंडिपेंडेंट सेट बन सकता है 10 एंड 40. दिस इज अनदर मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट. और इसका सम कितना है? 10 and 40 is equals to 40. So what is our problem? Our problem is not only to find the maximal graph, maximal independent set, but also the maximal independent set with maximum weight. So which one we will consider? We will consider the second one because its weight is more. So let us try and study the different paradigms for which we can solve this. The first one is called the greedy algorithm. Greedy algorithm is very easy. Greedy algorithm के steps हम लोग देख लेते हैं and then we will see an example of the same. Okay. So what's the example of the same is, let us suppose, just wait. Okay, let's start. A greedy algorithm says sort all vertices in ascending order based on their weight. बहुत ही सिंपल सा स्टेप है. आप सभी की सभी वर्टिसेस को डाल दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में. स्टेप नंबर 2 इज select the
vertices one by one and ensure that the selected vertices are not adjacent. Okay, and step number 3 is continue till more vertices cannot be added to the set. बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले सॉर्टिंग करेंगे, ग्रीडी क्या कहेगी, सबसे पहले जिसका वेट सबसे ज्यादा उसको उठा लो, और फिर एक एक करके उसके अंदर नोड्स डालते रहिए, और कब तक करते रहिए, जब तक आप उसको और ऐड नोड्स ऐड नहीं कर सकते। दिस इज इफेक्टिव, बट this is definitely not guaranteed to give the best, you can say, result. For example, consider this path graph: 1, 4, 5 and 4. Let us suppose this path graph is given to us and we are supposed to find the maximum weight, maximal independent set using the greedy algorithm. Step number 1 says sort all the vertices in descending order. I have written here the ascending, it should have been descending order. In descending order based on their weight. So descending order में लगा दीजिए, सबसे पहले 5 है, this one, उसके बाद ये दोनों 4 हैं, किसी को भी उठा सकते हैं आप, 4, 4 and 1. तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इंडिपेंडेंट सेट के अंदर सबसे पहले कौन सी नोड आएगी, 5 डाल दिया। जैसे ही 5 को डाला तो उसकी दोनों एडजेसेंट नोड्स जो हैं 4 and 4 अब ये कंसीडर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट टू 5 और इंडिपेंडेंट सेट में एडजेसेंट नोड नहीं आती हैं। तो कौन सी नोड बची, 1, तो आई कैन ऐड 1. नाउ देयर इज नो नोड लेफ्ट इन द ग्राफ, सो व्हाट इज द maximal independent set that we have derived using the greedy algorithm is 5 and 1. What is the total weight is 6. Is this the maximum weight? Is this the maximum weight? The answer is no, because if we had selected this node and this node, they both can be part of the independent set as they are not adjacent. The total weight could have been 4 and 4 is equal to 8. So that means a greedy algorithm can definitely be used because it guarantees a solution in polynomial time, but the answer is not guaranteed to be optimal. Best answer बिल्कुल भी होने के chances बहुत कम हैं, but still you will be able to find a solution. I hope you got this one. The next we have is called the divide and conquer. Divide and conquer में क्या होता है कि आप छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन छोटे छोटे सब रूटीन्स के सॉल्यूशंस को निकालकर सेट्स को सॉल्व कर उनके ऊपर यूनियन ऑपरेशन लगा देते हैं। So let's see the performance of divide and conquer for the same. If we have, let's say 1, 4, 5, 4. अब हम इसको दो सेट्स में डिवाइड कर देते हैं और इनको अलग अलग रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे और इनके रिजल्ट को ज्वाइन करते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर इस सबसेट में, ये जो छोटा सा सबसेट है, इसमें से मैक्सिमम नोड को उठाएगा ना, मैक्सिमम नोड इज 4. अब दूसरा ये वाला अलग से सॉल्व होगा, इसमें से मैक्सिमम नोड को उठाएंगे, दैट इज 5. फिर हम लोग इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, यूनियन, ताकि ये एक सेट बन जाए। और जब हम इसके ऊपर यूनियन निकालेंगे तो दीज आर द 2 selected nodes, but our answer is wrong because these 2 nodes are adjacent nodes and adjacent nodes cannot be a part of it.
तो हम लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन द आंसर्स, हमें इनको रोटेट करना पड़ेगा. It may seem very easy because the example is so small, but practically when you have you can say thousands of small graphs और हमें इन 1000 graphs के ऊपर union function लगाना है, then it is not possible or it is not possible in polynomial time to handle this thing. But still, if there are algorithms that exist that guarantees that the adjustment can be done, I can assure you that the performance of divide and conquer after these adjustments will be better than the greedy algorithm. So we have done two types of algorithms, greedy and divide and conquer. Divide and conquer says recursively apply the greedy algorithm to each small set and then apply the union operation, and if required then make certain adjustments so that the independent set property is still maintained. So with this we come to the end of the lecture today. We will continue with it in the next lecture, the same concept in the next lecture. Till then, thank you very much for attending the lecture.